Hello guys, welcome to this amazing YouTube channel again, and today we are going to discuss the part 2 of general anatomy. And today we are going to discuss about the general anatomical positions, like what are these things that you are currently seeing here. I'm going to discuss these all in today's session. So in study part, I have shown you what normally general anatomy is, why it is necessary to study general anatomy, and what are the subtopics, subdivision of anatomy, like cadaveric anatomy and internal anatomy and other things. So let's start our topic today, and thank you for your support. As I can see that in almost 24 hours you are going, the views on the videos are almost over 100, and तुम नहीं जानते, मतलब 100 प्लस भी होना, इट्स लाइक वेरी अमेजिंग फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 100 प्लस स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. सो मैं पहले तो इसके क्लासिफिकेशन को तुम्हें दोबारा से याद दिला देता हूँ. तो जनरल एनाटॉमी जनरल होता है, ये हमारे बेसिक्स को कंप्लीट करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू रीड है. पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी क्या है, जनरल एनाटॉमी की फंक्शंस क्या है, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जनरल एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है. तो अब आज देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बट यू शुड कंसिडर दैट बी डी चौरसिया जब तुम खोल के देखोगे तो दैट पार्ट विच आई taught in the last session, that means the part 1, and this one, in between these the history part of the anatomy came. तो हिस्ट्री को क्या ही पढ़ाना, इसलिए मैं हिस्ट्री को स्किप कर रहा हूँ. अगर तुम्हें लगे कि नहीं हिस्ट्री भी मुझे बताना चाहिए, सो यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम्हें हिस्ट्री भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, दैट्स ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज? सो टर्मिनोलॉजी है, सीधी सीधी बात है, हमें टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा. व्हाट आर द टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन, व्हाट यूज इन एनाटॉमी, राइट? तो वेरियस पोजीशंस, लाइक कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, लाइक इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन, इन पोजीशंस को क्या कहते हैं, प्लेन्स कि कैसे ये प्लेन्स डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में अभी देखने जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पोजीशन के बेसिस पे हम जनरल एनाटॉमिकल टर्म्स को पहले बेसिस करते हैं, क्वालिफाई करते हैं. एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन वो होता है जिसमें एक पर्सन स्टैंडिंग है स्ट्रेट विथ आइज, मतलब जब वो अपनी आंखों से स्ट्रेटली तुमको देख रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म्स बाय द साइड, दोनों आर्म्स जो है उसके साइड में हो, एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब उसके जो पाम्स है, ये जो पाम्स है वो फॉरवर्ड की तरफ हो, मतलब आउटसाइड हो इस स्क्रीन के, राइट? एंड बोथ फीट टुगेदर, ये दोनों फीट जो है, ये दोनों फीट टुगेदर होने चाहिए. एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन. लेकिन यू शुड कंसीडर दैट नॉर्मली जब हम क्लिनिकल बेसिस पे देखते हैं तो हम हर डायग्नोसिस को एनाटॉमिकल बेसिस पे नहीं कर पाते, क्योंकि हर पेशेंट जो है एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं खड़ा हो पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि व्हाट एनाटॉमिकल पोजीशन इज़. एंड एवरी डॉक्टर नॉट हैव दैट मच टाइम दैट वो उसको समझाए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फंडामेंटल पोजीशन को. एज यू कैन सी, आई विल जूम इट. फंडामेंटल पोजीशन, तो ये सेम होता है एनाटॉमिकल पोजीशन के, बस एक्सेप्ट क्या है कि एक्सेप्ट जो पाम होता है वो पीछे की तरफ या फिर बॉडी के साइड में होता है. सो यू कैन से कि दिस पाम विल गो लाइक दिस, एंड it will be there like this, okay, and so it will face the body. तो डेट्स द फंडामेंटल पोजीशन, और ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन होता है, इसीलिए पेशेंट इसी पोजीशन में रहते हैं. नॉर्मली तुम भी याद करो कि जब तुम डॉक्टर्स के पास जाते हो, क्या तुम बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में इस तरह से खड़े रहते हो? नहीं रहते हो. सो तुम नॉर्मली अपने हाथों को अपने बॉडी के साइड मोड़ के रखोगे, और दैट पोजीशन इज नॉर्मली नोन एज फंडामेंटल पोजीशन, जो कि मैंने आगे तुम्हें बता दिया था. नाउ टॉक अबाउट सुपाइन पोजीशन या सुपीन पोजीशन, बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते सही से. तो सुपीन पोजीशन क्या है कि एक पर्सन है जो कि अपने बैक पे लेटा हुआ है या फिर लाई किया हुआ है, लाइक दिस. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सुपीन पोजीशन है, इसका बैक जो है डाउनवर्ड है टुवर्ड द बेंच, टुवर्ड द बेड, एंड इसके जो आर्म्स है वो साइड में होंगे, पाम जो है वो फेस करेगा. ये जो पाम है, ये पाम जो है ऊपर की तरफ फेस करना चाहिए, ये याद रखना. एंड फीट पुट टुगेदर, ये दोनों फीट जो है इसके, ये दोनों फीट जो है क्लोज होने चाहिए. पाम जो है वो अपवर्ड फेस कर रहे होंगे.
तो इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में सब कुछ सुपाइन जैसा ही है, बस द पर्सन या द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज चेस्ट एंड एब्डोमेन, मतलब उसका एब्डोमेन वाला पोर्शन इस बार नीचे की साइड होगा और उसका बैक जो है अपवर्ड होगा, तो फिर इस पोजीशन को हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ओके, नाउ लिथोटोमी पोजीशन, ये एक ऐसा पोजीशन है जो कि मैं तुम्हें अच्छे से बताना चाहूँगा। लिथोटोमी पोजीशन वो पोजीशन होता है जिसमें हम नॉर्मली बेबीज़ की डिलीवरी करते हैं, लाइक तुम इस पिक्चर में देख पा रहे होगे। सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड लिथोटोमी पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो लेग्स होते हैं वो अपवर्ड फेस कर रहे होते हैं, एंड फीट्स जो है उनको एक स्ट्रैप बांधा हुआ होता है यहाँ पे, और उससे इनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये पोजीशन मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है ताकि बेबी जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ सके। So you can say that the most favorable position for the baby to come out from the birth canal is the lithotomy position. Now we are going to discuss about planes. So there are three type of plane: a sagittal plane, a coronal plane, and transverse plane. Let us see what these are. So a plane passing through the center of the body, dividing it into two equal right and left half. That means one right and one left. It's the median or the mid sagittal plane. So जो प्लेन इन इसको हाफली डिवाइड करेगा इस साइड में और इस साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इस प्लेन को हम मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। मिड सजाइटल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये मिड से जाता है, राइट। अगर ये थोड़ा सा भी मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा भी हट के हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस आए, तो इसको हम सिंपली सजाइटल प्लेन बोलेंगे। बट when it is across the midline of the body, we are going to say it mid sagittal plane. That's why in the picture they are only showing the sagittal plane, not mid sagittal plane, because they both are same. The difference is mid sagittal plane just passes through the midline of the body, and sagittal plane passes from the from away from the midline, but parallelly to the mid sagittal plane. Now, the plane at the right angle to the sagittal or median plane, which divides the body into anterior and posterior half, is called coronal plane. So, anterior or posterior, समझो, anterior is the front of your body, anterior is the front, and posterior is the back. So, if you are स्टैंडिंग इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन, तो जो तुम देख पा रहे हो अपने फ्रंट के साइड पे वो तुम्हारा एंटीरियर पार्ट होगा, और जो तुम नहीं देख पा रहे हो तुम्हारे पीछे के साइड में, तुम्हारे बैक के साइड में, वो तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड क्रोनल प्लेन, जो कि इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इस प्लेन को हम क्रोनल प्लेन बोलते हैं। एज यू कैन सी, ये क्रोनल प्लेन जो है हेड के मिडिल से जा रहा है यहाँ पे, और ये बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर रहा है। 1 मिनट। So you can see that this plane is going just like this, and it is dividing the body into one posterior part and one anterior part. Anterior part is the front part, and posterior part is the back part. Got it? Now, a plane at right angle to both sagittal and coronal plane, जो कि sagittal plane और coronal plane दोनों ही के right angle पे हो और body को upper part और lower part में divide कर दे, ये transverse horizontal plane होता है। वैसे भी horizontal का मतलब तुम अच्छे से जानते होगे कि horizontal line जो होता है वो x axis होता है और vertical line y axis होता है, तो वहाँ से भी तुम समझ सकते हो कि x axis is in 2D dimension। तो 2D dimension में जब तुम इसे काटोगे from the middle of your abdomen, near the abdomen, सो ये तुम्हें अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड होगा, और इस प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, राइट। देयर आर टू मोर प्लेन्स दैट यू हैव टू स्टडी, उसके फोटोज नहीं है तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्लेन। एनी अदर प्लेन अदर देन कोरोनल, कोरोनल वाज व्हाट, कोरोनल वाज द प्लेन दैट इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू फ्रंट, दैट मीन्स एंटीरियर, एंड द पोस्टीरियर पार्ट। Transverse, that is dividing into upper and lower half, and mid sagittal plane, that is dividing the body into left and right half, is called oblique plane. Like there, like you draw a line from here to here. So this line is basically dividing the body into this part and this part. इसमें ये पूरा part आ जाएगा, and इसमें ये वाला पूरा part आ जाएगा. So this plane is known as oblique plane. What plane? Oblique plane. Got it? Now, cardinal plane, it if any plane transfers the center of body, it is called the cardinal plane. That means कि कोई भी ऐसा प्लेन जो कि तुम्हारे बॉडी को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करे, बिल्कुल मिडलाइन से डिवाइड करे, चाहे वो क्रोनल हो, चाहे वो सजाइटल हो, या फिर चाहे वो ट्रांसवर्स प्लेन हो, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, उस प्लेन को हम कार्डिनल प्लेन कहते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस बिकॉज ये बुक में है और ये तुम्हें दिख नहीं रहा है। सो कार्डिनल प्लेन क्या है? कार्डिनल प्लेन, एनी प्लेन
dividing body from the midline. So कोई भी प्लेन ऐसा है जो कि मिड लाइन से एकदम क्रॉस कर रहा है, मिड लाइन से जा रहा है एंड बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आइदर सिमेट्री और अनसिमेट्री, बस मिड लाइन से जाना चाहिए और टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? इस प्लेन को हम कार्डिनल प्लेन कहते हैं। Fundamental position, I have already told you that the patient normally not knows about the anatomical position. So normally in clinical practice we consider the fundamental position over the anatomical position more. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? दिस इज अ टर्म रिलेटेड टू फिजिक्स, बट हम इसे एनाटॉमी में कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेंट्रल ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री planes that we have discussed are going to intersect with each other. Like if you say here, so this is the point between the abdomen, inside the abdomen of course, so where the body is divided by sagittal plane, coronal plane and transverse plane, and all planes are 90 degree to each other. That means all planes are perpendicular to each other and they are dividing the body into two halves. So this point where they all intersect to each other in the middle, that is known as center of gravity. Got it? Now, the most good part here is term used in relation to trunk, neck, and face. So, how do you define the other portion, other part of the body? So, we are going to discuss that now. So, normally, first of all, there is a ventral and anterior in the front. और as I said, जो भी portion तुम्हारे front में आएगा, that means front portion जो होता है तुम्हारा, वो ventral या anterior portion होता है. Dorsal और posterior, जो बैक के साइड में होगा वो तुम्हारा डॉर्सल और पोस्टीरियर पार्ट होगा. मीडियल, कोई भी लाइन जो बिल्कुल बीच से जा रही हो, बिल्कुल बीच से जा रही हो, इस चीज को मीडियल लाइन बोलते हैं, मीडियल पोजीशन बोलते हैं. यू शुड नो कि कोई भी ऑर्गन, लाइक इफ हार्ट इज हेयर, कंसिडर इट हेयर, सो इफ हार्ट इज हेयर, सो हार्ट इज मीडियल, बट योर हैंड इज नॉट हेयर, not across the midline, it is farther away from the midline, so the hand is not an medial organ, it is a lateral organ. But your heart which come across the midline, it is a medial organ. तो नॉर्मली हम मीडियल एंड लेटरल को एनाटॉमी में ऐसे ही डिफाइन करते हैं, किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए कि वो मीडियल के पास है, मीडियल एक्सिस के पास है, या फिर लेटरल पॉइंट पे है, मीडियल एक्सिस से थोड़ा सा दूर है. Now, proximal, cranial, and superior, all three are equal, all three are same, and that's the head end of the body. मतलब जो upper part of the head end of the body है, इसको हम caudal cranial भी बोलते हैं, proximal भी बोलते हैं और superior भी बोलते हैं, right? And the tail part of the body, इसको हम distal बोलते हैं, caudal बोलते हैं and inferior बोलते हैं. एक्चुअली में क्या है कि जब एम्ब्रियो, हमारे एम्ब्रियो मदर के वुम्ब में पूरे प्रोसेस से जा रहा होता है, तो हेड एंड इस साइड होता है एंड द टेल एंड इस साइड होता है. योर लेग्स कम below it and your hands come below it, so this portion is called the cranial portion and this portion is the caudal portion. So there it actually defines, हम उसी को पर्सपेक्ट में लेकर चलते हैं कि कहाँ हमें कहाँ हमें proximal बोलना है. First cranial portion was called as proximal and superior, and the caudal portion is called the distal and the inferior portion. Okay, but here, like BD Chaucia have said that proximal also come in this thing and distal also come. I'm going to tell about something. So like here, if this is your body and this is your uh, think of hand, right? So this is a body. So this portion which is attached to the main trunk, main body, this is known as proximal portion. What portion? Proximal portion of the body. So proximal portion of the body is defined as that part which attaches to the trunk or to the near of trunk. But the fingers and the wrist portion you got here, these are the distal part. Why distal? Because they are at some distance, from the original body, from the trunk. Got it? Now let's come over to the topic again. Superficial. What is superficial? Superficial is the close to the skin or toward the surface of the body. So everything to the surface of the body, like your skin, like your dermis. So these are the superficial organs. And the what is deep? So deep is away from skin, away from the surface of the body, like the organs are always away from the skin. It is very inside of the body, like in the core. So they are the deep structure.
They are the deep structures. But like your skin, which is superficial and outer to the body and interact with the environment, so these are the superficial organ, superficial structure. Now, what is ipsilateral? Ipsilateral means is on the same side of the body as another structure. Like ipsilateral को define करने के लिए we have to define two organs at the same time. Like we are defining the left limb and the left lower limb. So left upper limb and left lower limb, these both are on the lateral side, lateral plane of the left side. These both are on the left side. So that's why they are on the same side, because so we call them ipsilateral organ. And what happen if they are on the other side? Like if we consider left hand, left upper limb and right lower limb, if we consider right lower limb and left upper limb, then they are called as contralateral. All these are given in the book, as I will show you. Ipsilateral on the same side as the another structure, like the upper limb and lower limb comparison, and the contralateral is on the opposite side from another structure, like the right upper limb and left lower limb. Now invagination is the projection inside, like you can understand that this is your skin, and there is a nail which penetrate inside your skin. So the nail is actually invaginated into your skin. So whatever goes inside directly, that's we called as invaginated in the anatomy. What is exvaginated? Again, same thing, but in the opposite sense, that if anything which come out of the body from the skin, from the inside, that is called as the evagination. Like you can say that this is your skin and this is the hair growing from the skin. So this hair is the evagination of the hair fiber. Now, term used in relation to the upper limb. Normally हम upper limb को consider करते हुए what are the terms we normally use? Let us see. First, I rub all this. All of these notes, what I write and what I note, are going to be available on the Telegram ID, Telegram link that I'm going to give you in the description. You go there, and this all rough work is going to show up there. So term is used in the upper limb. So the first, ventral and anterior, is the front aspect, as we see earlier. Dorsal and posterior is the back aspect. Medial border is in the middle, and lateral border in the out. But what according to the limb, that we are going to discuss. So lateral border means this border. That means the outer border of the skin. That means the shoulder outer border to the thumb of the hand or the upper limb. And the medial border is this border, which is from the inside of your shoulder to the little finger of your upper limb. So this is known as the medial border, and this is known as the lateral border. Got it? This to both okay. Middle border lie along the little finger, medial border of the forearm, as I said, and lateral border follow the thumb, lateral border of the forearm, as I said. Now proximal is the close up to the root of the limb, and distal is away from the limb. That's also we have discussed. Now palmar aspect is in the front of it. So as you can see here, that this is the palm of this human body. So this aspect in the front of the palm, this is known as the palmar aspect of the palm, या palmar aspect of the wrist. So what will be the back side of the palm? So back side of the palm is called as the dorsal aspect. Everything in goes in the back is called as dorsal or posterior, and everything which comes toward the front of any body part, it is called as the ventral or anterior. So you can say basically define that the ventral or anterior portion of the palm is called the palmar aspect, and the dorsal or posterior portion of the palm is the dorsal aspect. What is flexor? Is the front of the upper limb, and extensor is the back of the upper limb. So normally you have to consider like this, that this is your so this is your upper limb and this is your elbow joint. So this portion it is known as flexor. Try to remember this. And this back portion is called as the extension.
because it is going to illustrate you that during the when I teach you the type of movement in the upper limb and type of movement in the lower limb, there are also two terms come, flexion and extension. So flexion basically means folding of the elbow joint. So the angle between the upper humerus and the radius ulna become less, and extension means of course the extension of the angle between these and making the whole arm in 180 degree to each other. Now when I will going to discuss with the lower limb, of course we have to rub this first. So now everything what we have seen about the upper limb goes similar with the lower limb, but there are some differences, like posterior is the back of the lower limb, everybody knows until now. Anterior is the front of the lower limb. But what medial border and lateral border, because the arrangement of lower limb and the upper limb are quite different. So what is the difference here? Let us see that the medial border lie along the big toe or hallux, middle border leg and thigh. So what I have taught you that the medial means the middle portion. So middle portion means this one. And if you see your legs, so you can clearly visualize that the toe portion, you can clearly visualize that the toe portion comes in one, whereas in the upper limb, the thumb portion goes to the outside. During the anatomical position, we are considering all this. So what the middle border for the lower limb here is that it goes along the middle line of the lower limb and towards the big toe, or big toe is also known as hallux. So you should remember that big toe is also known as hallux, and this is known as the medial border. Now when we consider the lateral border, that means the outside border, then it goes with the outside border of lower limb and to the small toe or the little toe. So that is known as the lateral border of lower limb. Got it? But you should remember that when we are considering the lateral border of the upper limb, we are considering this border which goes not to the small finger but to the thumb, whereas something opposite have happened to the lower limb, that the lateral line is going toward the little finger and little toe, or the medial line is going toward the thumb or the big toe or hallux. Now flexor and extension are same. So flexor is this aspect actually. Let me rub this. So flexor is this aspect, the back aspect. What happening in the upper limb is that the flexion come from the front aspect of the upper limb, but in the lower limb flexion come in the back side, because our legs, our lower limbs actually fold toward the back, not the front like the upper limb. So flexion comes in the dorsal aspect, and the extension here will come in the front or the anterior or ventral aspect. Now again, proximal is close to the root of the limb, so this part will be called as proximal. Let me rub this again. So this part is called the proximal end of the lower end, and this which is at a far away from the joint, it is called as the distal end of the lower limb. Got it? Now there are four terms, and these four terms are the last topic of this lecture. Then I will come with the terms related to the movement of upper limb, lower limb, trunk, and the head and neck aspects also. So ventral toward the belly, like anterior, that means the front. Dorsal toward the back, like posterior, in the back. Cranial or rostral toward the head or superior. So cranial is same as superior and superior, or it is also same as what? Same as rostral. So all these are same, and these all goes through this position, that means the cranial position. Actually we define it on the embryo stage only. When you are going to study about the general embryology, then you will go and see there that the axis of the body is defined only there, and according to that we are going to define all the origin of the organ and all the part of the body. And the caudal end, of course, toward the tail. Not when we are considering the tail or the caudal portion, you are not going to consider this portion, because when we consider in the embryo, the lower limbs are actually downwards and upper limbs are of course downward, and body will be like this aspect. So this is called the cranial or anti superior
portion, and this is called a caudal portion where the tail lies from. So I will tell you in this diagram that the tail comes from the this end. So this portion is called your caudal portion, where the tail comes from, or where the last vertebrae of the body joins to form a single bone. That is the cranial caudal portion of the body. This is the portion which is caudal here. This is the position caudal to the body. This is the position caudal to the body. This is cranial. This is cranial. This is cranial, and this is caudal. This is cranial, and this is caudal. So that's all for today, guys, and hope that you have understand today's video far more than the other two ones, because I'm going to actually on your feedbacks. Normally we are going to just lower the speed of the volume, and of course the amplitude of volume should be increased as you have said. And thank you for watching this video. Hope that you like it, and please press the subscribe button which is red in color and below here, and please press the bell button also, so you can get the latest update about the channel. And guys, I am also going to upload some videos regarding physiology and biochemistry also. So tell me that you want that videos, that lectures also or not.